Now let's close this topic today once for all. And hardly 15 minutes this topic will take. Hardly 15 minutes. And then we are done. One question of resistivity will always come in every exam that you give, either resistivity or resistance. Although this concept will even continue in the next part 8b, but resistivity is over. Let's see. I'm writing the question here. Yesterday we did till question number 9. Let's see, start from question number 10. I'm writing the question. Let's see. A wire of resistance 3 ohm. Okay. So solution also I'm writing here. Resistance of the wire is 3 ohm. I'm writing resistance 1 is 3 ohm. And length 10 centimeters. So I'm writing the length as 10 centimeters. This is also given. Then question says is stretched. Stretched means, see, there is a problem with stretching the wire. When we stretch the wire, it becomes thin. Yes or no? Now question says this is stretched to 30 centimeters. The new length that we are giving to this wire is 30. So we have stretched it 3 times. So this means if initial area of the wire was A, area of cross section. So the new area of the wire will be A by 3 because we are stretching it. स्ट्रेच करते हैं अगर वायर को तो पतली हो जाती है, तो एरिया हो जाएगा a by 3. Then question says it is stretched to length 30 centimeter. Then it says question, assuming that it has a uniform cross section. I'll tell you what's the meaning of uniform cross section. What will be its new resistance? New resistance means R2, question mark. Check carefully. Is this clear? What happened? We stretched the wire. वो 10 सेंटीमीटर की थी, हमने उसे स्ट्रेच करके 30 कर दिया. तो इसका मतलब ये हुआ बेटा हमने उसको 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया. कितना स्ट्रेच कर दिया? 3 गुना. तो अगर हम किसी वायर को, कल भी सीखा था, अगर स्ट्रेच करते हैं तो पतली हो जाती है. Now question says that the wire has uniform cross sectional area. What is the meaning of cross section? This part. Let's say if we have a burger and if I cut it into 2 pieces, तो ये जो पार्ट विजिबल होगा इस बर्गर का, ये वाला, ये होगा इसका क्रॉस सेक्शन. मान लीजिए स्प्रिंग रोल है आपके पास, ये चाउमीन निकल रही है, तो एक कट करके जो मान लीजिए ऐसे कट कर दिया हमने, सो दिस पार्ट, दिस ब्लू पार्ट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? चाउमीन जहां से दिखती है ना, राइट. दिस ब्लू पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? द क्रॉस सेक्शन. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब है वायर थ्रू आउट एक जैसी है, एंड ऑल द वायर्स आर लाइक दिस. ऑलमोस्ट सारी वायर्स जैसी होती हैं. उनका क्रॉस सेक्शन क्या होता है? यूनिफॉर्म. तो हमने लिख दिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम वायर, हमने सेम वायर को ही ऐसे खींच के 3 टाइम्स किया है. 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर कर दिया बेटा. So its resistivity will remain what? Same. Because resistivity is the resistance of the conductor of unit length and unit cross-sectional area. सही बात है. चाहे बड़ी वायर हो चाहे छोटी वायर हो, अगर सेम चीज की बनी है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी इस येलो वाले पार्ट की होगी. देखिए, हालांकि सेकंड वायर ज्यादा लंबी है, बट जब रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो सिर्फ इसी पार्ट की निकालेंगे, इतने की. और उतना ही पार्ट ऊपर वाली पुरानी वायर का है, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल की है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम. तो रेजिस्टिविटी वन, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल्स टू रल RA upon L R2 A2 upon L2. Let's put the values and get the answer. R is 3 ohm. Area is, we took it as A. Length is 10 centimeters. R2, A is A by 3. And this is 30 centimeters. Centimeter, A will get cut. 3 ohm upon 10.
shift 3 and this 3 that side, into 3 into 3 into 30 is equals to R2. So 10 will get cut. Resistance 2 is 27 ohm. Copy quickly. I'll give you some time. Those who have just come, please take the screenshot because I am erasing this. जल्दी से कॉपी कर लीजिए. Done, beta? Easy question. Let's do. There are 4 more questions. We'll do them quickly. Now, question number 11 is also same. Question 11. Not same, just opposite of this. Just opposite of this. Next question. Let's see. Question number 11. A wire of resistance. We have a wire of resistance 9 ohm. I'm repeating. In case if you haven't copied, quickly take the screenshot, beta. Those who came late, those who joined late, quickly take the screenshot. This question is same as the previous questions. Done? Okay. Let's see. Question number 11 now. I'm writing the question. I'm writing, beta. It's very important to read the question. Question says a wire of resistance, what? 9 ohm, having length as what? 30 centimeters, is tripled on itself. This is important. What is the new resistance? Yes, this is 9 ohm. There is a wire. Solution. So the resistance of the wire R1 is 9 ohm and the length of the wire is 30 centimeter. Now let's understand what is the meaning of tripled on itself. It is just opposite of stretching. स्ट्रेचिंग में हम क्या करते हैं, एक वायर को खींच के कर देते हैं पतला. इस बार क्या किया है हमने, हमारे पास वायर है ऐसी, उसको अपने ही ऊपर ट्रिपल कर दिया. ट्रिपल मतलब इसको एक बार घुमाया, दूसरी बार ऐसे घुमाया और तीसरी बार ऐसे घुमाया और फिर मोड़ दिया होगा, ऐसे वाइंड कर दिया है आपस में. रिमेंबर दिस इज नॉट इंसुलेटेड वायर. जैसे चार्जर की जो वायर होती है वैसी नहीं है. उसको तो अगर आप 3 बार अपने उसके ऊपर लपेटेंगे भी तब भी करंट को तो उतना ही चलना पड़ेगा क्योंकि उस पर तो प्लास्टिक लगी है. बट ये कॉपर की नॉर्मल वायर है, उसपे प्लास्टिक नहीं चढ़ी है. नॉर्मल वायर सोचिए, कॉपर कॉपर की है. उसको आपने एक ऐसे 2 और ये 3 वायर को ऐसे लपेट दिया. और जब इसको लपेटा और ऐसे ट्विस्ट कर दिया आपस में तो वो सिंगल वायर बन जाएगी. नॉर्मल वायर्स भी जो आती हैं वो बहुत सारी वायर ट्विस्टेड होती है ना एक दूसरे के ऊपर, देखा होगा आपने. वैसे हमने ऐसे किया, सिंगल वायर को 3 टाइम करके ट्विस्ट कर दिया उसके ऊपर. प्लास्टिक नहीं है कवर्ड इसमें, तो सिंगल वायर बन जाएगी. क्या होगा, जो लेंथ 30 थी कितनी हो जाएगी वो 10. और क्योंकि वी हैव wire of resistance, we have a wire of 9 ohm resistance. No problem, I am doing it again. Let's see. I'm doing the whole thing again, beta. Check. Let's see. Solution. I am reading the question. A wire of resistance 9 ohm. So resistance 1 is 9 ohm. Having length 30 centimeters. Alright. Is tripled on itself. ये समझने वाली बात है. I'm just opening the camera. All of you will see what's happening here. Now, when we triple a wire on itself, you can check the video. This is the wire. But the problem with this wire is it is insulated. जो normal wire हमारे पास होती है वो क्या होती है? Insulated का मतलब क्या होता है? Insulated का मतलब क्या होता है? प्लास्टिक चढ़ी होती है उस पे. ये है insulated का मतलब. अगर ये तो पूरी वायर है, अब अगर मैं इसको इसी के ऊपर ऐसे ट्रिपल कर दूं, 3 गुना ऐसे कर दूं, ट्रिपल कर दूं, मतलब अगर ड्रॉ करे उसे तो मान लीजिए पूरी वायर तो ऐसे है. इफ आई ट्रिपल इट ऑन इटसेल्फ तो ऐसे ट्रिपल कर दी, देखिए ऐसे, और फिर इसको ट्विस्ट कर दिया आपस में. सो वी गेट अ सिंगल वायर बट दिस वायर वुड बी थिकर.
but the wire that we are talking about here is not insulated. उसमें प्लास्टिक नहीं चढ़ी हुई है। अगर प्लास्टिक नहीं चढ़ी है उसमें तो क्या होगा बताइए? जब आप उसको उसी के ऊपर 3 बार लपेटेंगे तो वो मोटी हो जाएगी ना। आपने बताया कुछ सिंगल वायर भी जो होती है, वायर तो देखिए आपने इंसुलेशन हटाए उसका, तो उसके अंदर बहुत सारी पतली पतली वायर होती हैं जो ऐसे ट्विस्टेड होती है। तो वैसे ही ये वाली वायर भी नई जो बनेगी ये ट्विस्टेड होगी ऐसे, और उसकी जो लेंथ पुरानी 30 थी कितनी हो जाएगी बताइए? लेंथ 2, आपने उसको 3 गुना कर दिया है अपने ऊपर ही, 10 हो जाएगी। क्लियर बेटा? देन वी नो इफ एरिया इज ए, एरिया 2 विल बिकम 3a। वायर मोटी हो जाएगी, स्ट्रेच करने पे पतली हो जाती है, और उसी के ऊपर अगर हम उसको वाइंड कर देते हैं, मतलब ट्रिपल कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? एरिया ठीक मोटा। वायर आर टू, Just is this clear? Right, बेटा चलिए, this question is clear now. So R2 is equals to 1 ohm. Easy है, simple calculation. जब वायर ट्रिपल होगी तो, हाँ जब वायर को हम ट्रिपल कर देंगे तो देख यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाएगी उसमें से, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि उसका पुराना रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता देखिए। जब हमने उसको ट्रिपल कर दिया, व्हेन इट इज ट्रिपल्ड इटसेल्फ, एक बात हुई कि उसकी लेंथ छोटी हो गई, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम हो गया। दूसरी बात उसका एरिया ज्यादा हो गया, तो एरिया ज्यादा तो और रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम। वैसे ओरिजिनल रेजिस्टेंस 9 ओम था, देखिए ओरिजिनल रेजिस्टेंस 9 ओम था, हमने उसकी लेंथ को 3 गुना कम कर दिया, 3 से डिवाइड, 3 ओम होना चाहिए था फिर नया रेजिस्टेंस। पर जब हमने उसको ट्रिपल किया तो उसका एरिया भी 3 गुना हो गया, तो 3 गुना और रेजिस्टेंस कम हो गया, तो आंसर। क्योंकि अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम, लेंथ घटती है तो भी रेजिस्टेंस कम, इनवर्सली एंड डायरेक्टली। चलिए लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's take the next question. Next question is beta question number 12. I'm writing what length of copper wire, we need to find the length of specific resistance. What is specific resistance? Resistivity, that's right. Specific resistance is the resistivity. Resistance 1.7 into 10 raised to the power minus 8 ohm meter. ये यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। And radius, how much? 1 millimeter is required. Millimeter is required for what? So that its resistance is 1 ohm. Easy question. Let's do the solution. We have resistivity 1 ohm. We have the resistivity as 1.7 into 10 raised to the power minus 8 ohm meter.
Then radius is given as 1 millimeter. How will I convert it into centimeter? Milli means 10 to the power minus 3. Like kilo means 10 to the power plus 3. Milli means 10 to the power minus 3. So it is 10 raised to the power minus 3 meter. Then question says resistance is 1 ohm. Let's use the formula. We know R is equals to rho L upon A. So 1 is equals to 1.7 into 10 raised to the power minus 8 into length upon area. Now, every wire in the new book, it's 2 ohm. Okay, I'm using the old book. Please check. I'm sorry. In the new book, they have changed the value as 2 ohm. Check again, all of you. Is it 2 beta? But in the old one, it's 1. So we'll change it to 2. Fine? Now, area. Now, see, all wires are what in shape? Circular. Their cross section is a circle. कोई सी भी वायर आप उठा के देखिए उसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन का होता है वो क्या होता है सर्कुलर सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर we'll have pi r square. Let's put the values. 2 equals to 1.7 into 10 to the power minus 8. We know pi is 3.14 into radius is what 10 to the power minus 3 meter square. That's fine. Take this up, cross multiplication. 10 to the power minus 3 will become 10 to the power minus 6. This will go down. 1.7 into 10 is the power minus 8. Take this up, equals to L, or L is equals to 6.28 upon 1.7. 10 is the power minus 6 into 10 is the power 8. Now this is nothing but what? Now this is nothing but simple calculation beta. So remove the decimal. It will be 100. 100 will cut this. Remove the decimal 10. So we're getting 6280 upon 70. Now all of you can divide this. Should I write down the answer directly? It is 184.70 meters. Is that clear? 184 points. And when you'll divide, book का आंसर है ये. नई बुक का कितना आंसर है? कोई नया बच्चा ही है यहाँ पर. It will not go 17. How much is 62? 17 4 is 68. So it should go by 3. 17 369.4 meters is the correct answer. Understood? Clear? Let's see second last question. Quickly check beta. Question number 13. It's a big question, so I'm not writing it on the board. Please read. Quickly copy. Then we'll do the next one. Then one more question. Question number 7. That's it then. The topic is over. Finished. See, whenever current is given in MA, means small MA. Capital MA means mega ampere. Mega means 10 to the power 6. Small m means milliampere. So 10 to the power minus 3. Chaliye. Quickly copy beta. Why are you taking so much time? Then it is simple calculation. Okay. Done. Next question. This is very easy. Question number 13. Let's see. This question says the filament of a bulb takes 100 milliamperes. We know milliampere current. Milli means what? 10 raised to the power minus 3 milliampere. Milli minus 3 will go down. It will become plus 3. 10 to the power plus 3 means 1000. 1000 ampere. 0 will get cut. So current will be 0.1 ampere. And this current comes where potential difference is 0.2 volt. This is what the question says. All right. Tell me what is R. You know, R is equals to V upon I.
V is 0.2, I is 0.1. The resistance is coming as 2 ohm or 2.0. Then question says, when the potential difference across it becomes, we have a new potential difference. V 1.0 means 1 volt. When potential difference increases, then current should also increase. So no, Ohm's law, V is directly proportional to I. So potential difference increased to 1, and current is also, I guess, 400 milliampere. Milli is same. Small m means milli, 10 to the power minus 3. If you take it down, it will become plus 3. And then 10 to the power 3 means 10 3 times, that is 1000 ampere. 1, 2, 3, 4. I will be 0.4 ampere. Formula of R is V upon I. R is, what is V? 1 upon 0.4. Remove the decimal. Coming as 2.5 ohm. Now there is a question. The Ohm's said, Ohm's law refuted हो गया. Ohm ने बोला था कि भाई V is direct, I is direct proportional to V और V is directly proportional to I. And then Ohm said कि मैं एक constant लगाया हूं यहाँ पर IR. Ohm ने बोला था ये constant रहता है. जो R है किसी भी कंडक्टर का वो क्या रहता है? Constant. Ohm बोला था because whenever we remove the proportionality sign, like Ohm remove, we have to put a constant. Ohm ने बोला था R constant है. देखिए हमने एक ही बल्ब का निकाला था, पहले आया 2, आगे 2.5 गड़बड़ हो गई. But Ohm added one line. He said, temperature of the conductor should remain constant. Temperature of the conductor should remain constant. And we know, bulb on होएगा तो क्या होगा? Its temperature will increase. And this is what the question asks. Question says, calculate the resistance of the filament in each case and account for the difference. Write down. The resistance of the filament increases because of the increase in temperature. Write down. The resistance of the filament increases because of the increase in the temperature. The resistance of the filament increases because of the increase in temperature. Now let's do the last question. I'm erasing this. This question is based on graph. Question 7, beta. We didn't do this question. Copy quick. I can do that question here only. Question 7. I'm just writing the question, beta. Okay, that question is big. Done. So I'm writing the question. In an experiment मतलब हमने ही करा होगा, किसी ने किया होगा, of verification of Ohm's law, वेरीफाई करा होगा Ohm's law को कि भाई R जो होता है वो कांस्टेंट रहता है. Ohm's law, following observations are obtained. चलिए देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन हुई है. V and I, potential difference 0.5 for 0.2. Then it is 0.4. ये देखिए डबल हो गया. 1.5 at 0.6. Then 2.0 at 0.8. And then 2.5 at 1.0. Done. The first part of the question says, draw the VI graph. Draw what graph? VI. V means potential difference and current. Solution. Now, whenever we draw a graph, we know we have to take equal intervals. Now, I am taking the intervals at 1 centimeter distance. All of you should take it at what? 1. I have taken randomly, but it's almost equal. Current is 0.2. This is 0. Then 0.4, 0.6, 0.8, 1.0. Voltage is 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5. Let's plot the points. When I is 0.2, V is 0.5. So when we plot it, this is the point. 0.4 will be at 1.
0.6 is at 1.5, 0.8 is at 2.0, and 2.5. So is this an ohmic conductor or non-ohmic? Ohmic. Use a scale for drawing this line, beta. Or we call it ohmic or linear. Ohmic conductor or what conductor? Linear resistor. Okay. ग्राफ नहीं नॉर्मली बना सकते हैं, पेपर पे बना सकते हैं इस ग्राफ को. टेक द डिस्टेंस एज 1 1. नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज, सी हाउ विल वी यूज दिस ग्राफ. क्वेश्चन सेज फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द करंट इज 0.5. चलिए फाइंड करते हैं. करंट को 1 पॉइंट कितना 0.5 करंट बताइए कहाँ है. 0.5 इधर होगा. ढूंढिए, ऊपर जाइए, इसके सेंटर में, यहां से भी सेंटर पे आएगा ये. So when I is 0.5, what is the value of V coming? 1 और 1.5 के बीच में क्या होता है? 1.25. Very good. 1.25 volt. Second part check करते हैं. चलिए. Second part of the question says, find the current when the potential difference is 0.75. Let's see. Potential difference means V. When V is how much? 0.75. Where is V 0.75? Between these two. Plot and then come down. Arrow, arrow. What will it be? I is equals to 0.3 watt ampere. Let's check the third part. Third part of the question says, find the resistance. Now you can find the resistance at any point. V upon I. You can take any value of V. You have so many. First वाली ले लेते हैं चलिए. 0.5 volt upon 0.2 ampere. Point removed. Answer is what? 2.5. Is that clear to you? Answer. So that's it for this topic, beta. We have closed all the numericals of resistivity and resistance. Initial ones of resistance. Right.